Namaskar, everybody, and welcome to Health is Wealth by Dr. Kalra and hosted by me. And yes, I can tell you good morning. So good morning, it's 11 o'clock. Yes. So as you all know, we meet now every Thursday at 11 o'clock on public demand. So you all can watch in the morning and then you can go wherever you have to go, right? So today we are going to discuss, Dr. Kalra, but still I will always introduce her for the people who are new. She is a very well-known doctor in New York from last 35 to 40 years. And she's oncologist and she's specialized in breast cancer. And what else, Jagji, you're special? I only know breast cancer. Breast cancer, I see a lot of patients in the Indian community also. But first, good morning. And of course, welcome to this, I call it information sharing. And if it helps you, I get very happy. And that's why we keep doing it, because wherever we go, somebody or other always asks me, oh, we like your thing, please keep doing it. Recently we went to, last week, and wherever I go actually. So I thought we will continue our series. It's mostly a general information, but if you need anything specific, you can always call me or I can guide you to where to get help. So आज का जो हमारा session है वो है arthritis पे. And you know what is arthritis? It's called wear and tear. Wear and tear means as we age, हमारी joints होते हैं body के, वो cartilage joints के बीच में होता है, वो पुराना हो जाता है. So with that, the bone and bone attached to each other. So this is just the general information. So let's start from the very beginning. We in our human body, we have 306 joints. Can you imagine, Jyoti ji, कितनी bones और कितने joints है? So joint is one connected to another. एक bone दूसरे bone से connection होती है, उसको joint बोलते हैं. हाथ में कितने joint है? मैंने कहा शायद मैं count करूं, पर मेरे से count ही नहीं हुआ. It's more than 35 joints in the hands and fingers. Then feet has so many joints, one bone to another. Then we get a joint, knee joints. Then we have elbow joints, wrist joint. आप बोलो कितने joints है? There, all these joints can get wear and tear. But wear and tear, when I talk about wear and tear, that means we are aging. So don't think arthritis can only happen with the age. The osteoarthritis is age-related. That is most common, and more than 3 million people suffer from it, real serious. But there are arthritis that can attack juvenile, means younger people. It's called juvenile arthritis. Then I'm sure you all heard about rheumatoid arthritis. And there's a gouty arthritis. There's a lupus arthritis. That means it's autoimmune. So there are other arthritis too, but let's concentration today on. So Jagji, yeah, in other words, जो हमारे joints होते हैं, arthritis उससे शुरू होता है, joints का disorder. तो joints का disorder बहुत सारी चीजों से होता है, तो आप आज उस पर डिस्कस करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बोला. वैसे तो age is number one factor, because as we age, we feel the stiffness and we feel pain. Arthritis affects everybody in a different way. It doesn't mean that you get the stiffness and you get the pain also, you get the disability also. No, you may just get the stiffness. So early sign in any joint, if you get morning stiffness, सुबह हाथों में ऐसे हो तो maybe it's early stiffness is coming up. Usually it comes after the age 55, 60, but in the younger people, for other reason, they can get arthritis also. So arthritis really means कि जो हमारे joint है ना, एक दूसरे से bones जुड़ी हुई हैं, उनके अंदर जो liquid होता है उसको lubrication करने के लिए वो कम हो जाता है, और जो cartilage protect करता है. Cartilage is not hard like a bone. It's मैं कैसे समझाऊं, कैसे इसको hard portion होता है, वो धीरे धीरे खुदरा जैसे होना चाहिए हो जाता है, एक से एक मिल जाता है. So the most common places for arthritis are knee, hip, neck, and the back is sciatica pain. So knee का सबसे common है, and that doesn't mean you cannot get a shoulder arthritis. You can get frozen shoulder, but these four are the common. आपने सुना होगा, knee replacement करते हैं, hip replacement करते हैं. You cannot replace the spine, and you usually can't replace the neck. So let's talk about a little bit more about the knee arthritis.
And why is it important? Why are we worried about that? Number one, it's uncomfortable. It causes pain. It causes stiffness, and you cannot walk properly. And if you don't take care of it, it causes disability, means teda meda ho jayega, and you look, it doesn't look nice. And none of us want that. And you can't walk. You know, agar aap dawa ke walk karenge, pain hoega. Nobody wants that. So we can try to prevent it. Prevention is not totally possible, but try to avoid the symptoms a little bit. So what can we do for the knee? जैसे आपको लगा आपका arthritis शुरू हो रहा है या knee में दर्द हो रहा है, if there's an injury in the past, like sports people have injuries to the body, joints, they are more prone to arthritis as the age goes. So in the beginning, what you can do is, we all talk about it all the time. We can start doing exercise, daily exercise, eat properly, try to lose weight, because the more weight you put on the joints, the more likely they will get together and can cause pain. So ये तो general बातें हैं. Try to control your blood pressure, diabetes, everything. So we all know about that. What else can we do to get it better, better feeling or less symptoms as we go on? Some people do stretching every day. Not everybody is doing it, but I will say that we should all do that. Sit up or lie down. Anyway, sit up on the side of the bed and start massaging your both knees, because we are only talking about the knees, but you can do it to any joint. Start massaging both your knees, inside, outside, and then rub around on it. So this way, you know, the circulation keeps on going, and then we get more healthy nutrients to this knee, more blood supply, and maybe less wear and tear. I'm not saying it will totally get rid of it, but it will ease it in the future with less chances. And then the other trick I heard, in case you get this pain, in case you get the stiffness, try to, in the morning, not keep your room during this winter time very cold. Cold makes all these joints very stiff, like frozen जैसे हो जाते हैं ना, हम ठंडा पानी पीते हैं, गले में लग जाता है. The joints, the same thing, they get stiff. So try to keep your room comfortable temperature 69, 70 when you wake up, और आधा घंटा उससे पहले अगर आपके पास में Google Home है. So this way your room is warm enough when you wake up, and उठते ही उसको मसाज करो, उठने से पहले. Some people, you know, use the warm compressors at night, which is also good. So ये सब avoid करने के लिए हैं. And the new trick that I learned is, it's over the counter arthritic gel, especially Voltron. That used to be very expensive prescription. Now it's over the counter because it's so good. So जो gel होता है ना, you don't have to take Motrin, you don't have to take a Tylenol. Just put a little bit of gel every day or every other day and rub with it. तो जो भी जो stiffness हो ना, वो शुरू से ही better हो जाएगी. Try the same thing at night. Gel absorb हो जाता skin में बड़े जल्दी. So I said, okay, that's a very good thing. Especially if you wake up with stiffness of the fingers, you can rub a little bit of gel all around. I like that a lot. We just have to buy the Voltron. It's over the counter. So that's how you try to avoid. And then the second symptom sometimes is आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होती है, सीढ़ियाँ नीचे उतरने में तकलीफ होती है. That's already gone a little bit definite arthritis. So when it starts happening, don't just sit and wait. Go to the doctor right away and try to find out if something more can be done, or a therapy can be done that can avoid the further damage to the knee joint. And once the damage happens, then they will tell you if the therapy is not possible, they can give you injections in there to avoid the pain. But हमने वहाँ तक जाना भी avoid करना है with the pain, stiffness, disability. So if you need an injection helps too. You know, pain के लिए surgery will be option someday soon. Injection कितने दिन तक रहता है? 6 महीने तक? I have seen really various different results. कईयों को 6 महीने के लिए रहता है, कईयों को 1 हफ्ते में खत्म हो जाता है. That means they didn't get. Different orthopedic doctor give different things for injection. कोई लोग steroids डालते हैं उसके अंदर, कोई खाली pain medicine डालते हैं. So try to find out what they are doing, and then you can see what is the best. Just go to a really good orthopedic specialist.
अभी So at सर्दियां आ least रही हैं, सर्दियों में थोड़ा ज्यादा ही होता है लोगों को ये. exactly because of this cold weather you get the stiffness. So try to keep your socks on, so keep your feet warm. So जो heat जो होती है ना वो पैर से ऊपर ऊपर तक जाती है. Put some under garments जो होते हैं ना, they're like a pants or something, tights under the pants. Thermals, Yeah, thermal wear, that very helpful for the knee joint. Most of the people do that. I'm just reminding कि ये इस तरह से avoid कर सकते हैं. So try to really bundle up, especially when you go outside, और joint को expose मत करें cold में. तो इसके बाद में एक treatment है, but I have not seen too much talked about this, like acupuncture, and they can do platelet rich plasma in the joints. But maybe the results were not good. So, people are still offering it. Some works very well. There are a lot of people who want to avoid the knee surgery. I would like it too, to avoid the surgery, because downtown therapy, it's who wants this? But if you need to have it, we have all seen our friends going through the knee replacement and they come out really, really good. The therapy is very important after that. Therapy बहुत अच्छे से करनी है, तो आपका नी जो है ना almost नी हो जाता है. So I would say if you have a bilateral arthritis, do one knee at a time. क्योंकि अगर दोनों में दर्द होती है, but some people say let me just get it over with. So if you have a help at home, do both knees, but do one at a time. आपने भी देखा कितने लोग कितने अच्छे recover हो जाते हैं knee से. So don't be totally afraid of the knee, but let's try to avoid by doing these little things. We say exercise, eating right, cholesterol control, सब कुछ, और लेकिन जब हो जाए तो फिर then take good care of it. There's nothing you can do. Same thing goes for hip joint. Hip arthritis is also very common. आपने देखा फिर walk खराब हो जाती है. Then you say, oh, what is my life good? Never think psychologically down. Because ये आपने बीमारी अपने मांगी नहीं है. You did not do anything. It just happens. So people think, oh, it's my fault. I should have done this. No, it just happened. अब हो ही गया, तो do the best. And not say कि, people feel social life कम हो जाती है. They don't want to be in the public. That makes it worse. तो cycle हो जाता है. The worse you feel, the worse things get. So if you get arthritis and it's bothersome, you need a social life, talk to others, go to a friendship circle and share your experience. Share करने से पता लगता है कि what can I do? There are so many good doctors. We can always go to the city for the joint disease hospital. और मेरा ख्याल है 2 या 3 दिन वो hospital में रखते हैं after the joint replacement, because things are so good. In the olden days, you used to get anticoagulant, means prevention of clot, ahead of time injection. आजकल तो कितने अच्छे से वो दे देते हैं, उसी दिन देते हैं, 2 दिन देते हैं. I have not heard complications of like a clot in your lung or something. Really, to tell you frankly, that used to be one of the serious side effects from any joint surgery. That's why people were afraid कि, oh my God, the clot can happen. And everybody got anticoagulant, means prevention of clot. So that's something is much better. So same thing we can do to the hip joint. We can rub the hip joint, stretch your hip muscles, ऊपर नीचे, sideways. Try to keep the muscles active. तो आप तो मुझे मालूम है आप तो बहुत एक्सरसाइज करती हैं ना. स्ट्रेचिंग करती है, कितना चलती है, लेकिन समटाइम्स चलने से अगर अच्छे से कंफर्टेबल्स नहीं करना डाले तो और भी पेन हो जाती है. सो भी और मैं सबको यही एडवाइस करूंगी, इंक्लूडिंग यू, चाहे आप डॉक्टर हो, मत पहना करो नो टाइम में स्पेशली. देख लीजिए. हाँ, तो हर चीज के लिए टाइम तो निकालना ही पड़ता है ना. इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी एज वी एज. तो हमने देखो नी की बात करी, हिप का भी सेम, ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो. ट्राई टू रब इट, ट्राई टू स्ट्रेच इट. डोंट बी अफ्रेड इफ यू नीड सर्जरी सूनर और लेटर. तो अब हम स्पाइन के आर्थराइटिस की बात करते हैं. स्पाइन का आर्थराइटिस थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज यू जस्ट कैन नॉट डू द सर्जरी फॉर स्पाइन. देयर आर सर्जरीज, क्योंकि उनके अंदर जो कार्टिलेज होता है ना वो इतना पतला सा हो जाता है कि वो उसके में दोनों जॉइंट में देयर इज नो क्या बोलते हैं, कमराडरी नहीं है.
तो जो स्टिफ हो जाते हैं दे कैन इंजेक्ट, इसको बोलते हैं एपिड्यूरल, पेन के लिए कर सकते हैं. सो दे कैन डिसॉल्व जो भी आर्थराइटिस चेंजेस हैं थ्रू द नीडल. ऑल दीज न्यू टेक्निक्स आर पॉसिबल. सो बट अगेन स्ट्रेच योर स्पाइन, स्ट्रेच योर साइड स्पाइन होता है ना, स्पाइन ट्विस्ट एक्सरसाइज इज वेरी गुड. स्पेशली जो आर्थराइटिस होता है ना वो लंबो सेक्रल नीचे में होता है. आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेच माई सेल्फ, इवन आई फॉरगेट, आई डू फॉरगेट, and I'm going to get arthritis. I know that. And we should be ready for whatever comes our way. तो spine twist बहुत important है. अगर आप अपनी legs को पूरा ओपन करके टच कर सकते हैं toes को, very important. Spine को कितना flexibility मिलती है. So the idea is to keep our spine very flexible. So इससे ना आपका होगा arthritis कम, ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन स्टिफनेस कम हो जाएगी, आपकी जो मूवमेंट है ना वो बेटर रहेगी. और जो जो दो जॉइंट होते हैं ना स्पाइन के अंदर, उनके अंदर से नर्व जाती है, उनके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा. नर्व्स डोंट गेट द प्रेशर, देन द पेन कैन नॉट गो टू द लेग. So this stretching and exercise and therapy prevents the pressure on the nerves, and the nerves that go from back to the thigh to the leg to the foot, that's called sciatica. वो कम हो सकती है. So we can really stretch our spine. उसके बाद में हम आते हैं ऊपर वाले सर्विकल स्पाइन में. उसके लिए क्या करें ज्योति जी, आप बताइए. मैं तो रब कर रही हूँ एक्सरसाइज थोड़ी. एवरी मॉर्निंग नेक के लिए इधर देखो, इधर जाओ, उधर देखो, पर लेकिन जो भी करो जोर से भी मत करो कि अपने आप को. आई जस्ट सेइंग, जो भी करो प्यार से करो, एक दूसरे से प्यार से बात करो, अपने बॉडी से प्यार करो. और को हाय माय नेक 1 2 3 4 5 से. वो थेरेपी वाले तो कहते हैं 30 तक करो. आई डोंट थिंक वी हैव टाइम. सो वी डू दिस वे एंड दिस वे, फिर इस तरफ और इस तरफ, और ये सब करने के बाद एंड में उसको गोल घुमाना. आई सम पीपल से गोल घुमाओ शुरू में. आई डोंट थिंक सो, but you will see what's good for you. So again, same thing, because when we keep your neck flexible, the pain coming from neck can go to your arm. And nerves, just like in the back pain, we have all these lots of nerves coming from this cervical spine, and they go to the arm and they continue with the spine into the legs. So the pain cannot be just only in the hand, it can also be in the leg. So cervical spine तो बहुत important है, ऊपर से लेके नीचे तक. The only interesting thing I find is कि skull के ऊपर में जो joints है ना, उनमें कभी arthritis नहीं होता है. So if you get a headache, don't think it's arthritis, because उसके अंदर ऐसा joint है ही नहीं जिसके अंदर fluid है. So जब भी आपको headache हो, think of sinus, think of ear, think of other things, think of blood pressure, but don't think of, आप बोलो जाके ना, आप कोशिश करेंगे, हम किसी को बोलेंगे मेरे ना सिर में arthritis हो गया. Let's see if they know it or they laugh about it. So if they laugh about it, that means they know there are a lot of bones in the skull, by the way, but उनका arthritis नहीं होता. So now I think I covered the major joints. तो जो हमारे smaller joints है, hand and feet get also osteoarthritis. आपने देखा जो top of the finger है, वो कभी कभी सुबह सुबह stiff होती है. तो मैंने तो अभी से मसाज करना शुरू कर दिया. और अगर नहीं करेंगे ना तो टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां हो जाएंगी. तो आप भी करो. अभी ये आपके 5 इसमें ज्यादा होता है. 5. यस, सबसे पहला जॉइंट ये, इसको आपने सुबह रोज अभी शुरू कर दो सब लोग. और यहाँ पे आर्थराइटिस बहुत आता है. रिस्ट में जो आर्थराइटिस आता है ना, दैट्स यूजुअली रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दैट्स नॉट ऑस्टियोआर्थराइटिस. इट कैन कम बट नॉट वेरी कॉमन. एल्बो आर्थराइटिस इज आल्सो नॉट वेरी कॉमन, बट पीपल कैन गेट एनीथिंग. तो ये फिंगर हमने करनी है ऐसे ऐसे, रोज सुबह करते हैं, हम कर लेते हैं. ऐसे भी कर सकते हो आप, है ना. हाँ, एक बॉल होती है ना, जो स्टिफ बॉल होती है, दैट्स एनीथिंग टू कीप द जॉइंट्स फ्लेक्सिबल. ये करो. रिस्ट के लिए गोल गोल घुमाओ. कभी आप जाते हैं ना योगा में, वो हमको बोलते हैं ना ऐसे ऐसे करने के लिए, जस्ट टू स्ट्रेच द बॉडी. सो बट आई एम स्ट्रेचिंग ऑन द फिंगर्स बिकॉज दैट्स कैन गेट स्टिफ इन द मॉर्निंग. और अगर वो स्टिफनेस हो जाएगी और अगर हम नहीं उसका केयर करेंगे तो दैट कैन. तो उसके लिए हमारे को सर्दियों में ग्लव्स डालने बहुत जरूरी है. सर्दियों में जब हम बाहर जाते हैं ना, तो वी शुड ऑलवेज, इंक्लूडिंग मी, आई शुड लर्न फ्रॉम माय ओन थिंग.
that I should wear gloves when I go outside. And जैसे आप कहते हैं कि कैप भी डालनी चाहिए to cover the ears. एक joint होता है यहाँ पे, it's called temporomandibular joint. ऐसे मुंह खोलते हैं ना, तो टेम्पोरल बोन और ये मैंडिबल, इसको मुंह जॉ को मैंडिबल, ये जो जॉइंट होता है दैट्स एग्जैक्टली लाइक द शोल्डर जॉइंट. इसमें भी आर्थराइटिस होता है, लोग बहुत कम को मालूम होता है, और इससे आपका जॉ नहीं खुलता. तो इसको भी अवॉइड करने के लिए हमको कैप डालनी चाहिए. और एक नर्व निकलती है यहाँ से, इट्स कॉल्ड फेशियल नर्व. अगर उसको कोल्ड लग जाए, दैट इट्स राइट सुपरफिशियल इन फ्रंट ऑफ ईयर, ये बिल्कुल उसको हो जाए तो फेशियल पैलेसी हो सकती है, एंड देन यू कैन गेट अ ड्रूपिंग ऑफ माउथ. सो आई एम टेलिंग माई सेल्फ ऑल्सो स्टार्ट वेयरिंग प्रॉपर गियर व्हेन वी गो आउट फॉर वॉकिंग विद ज्योति जी, बिकॉज ये तो आपको घुमाने ले जाएंगे ना, तो ये नहीं देखेंगे कि कहाँ जा रहे हैं. पर मैं आपको पता है, घूमने जाने से पहले मैं सबको कहती हूँ मेक श्योर ग्लव्स, कैप एंड योर जैकेट. आई नो, मैं देखती हूँ जब आप मैसेज में लिखती है ना, मेक श्योर यू हैव योर ग्लव्स, मेक श्योर यू हैव योर हेड गियर, मेक श्योर यू हैव योर सॉक्स. मेरे को अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन कहना मानू ना मानू ये नहीं मुझे मालूम. बट आई विल डेफिनेटली मफलर भी लेके आऊंगी, और हम घूमेंगे जरूर सर्दियों में, लेकिन वी विल बी वेरी केयरफुल. तो ये हमारा हो गया. अब थोड़ी सी बात करते हैं दूसरे आर्थराइटिस के बारे में, विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल. द ओनली अदर आर्थराइटिस जो हमारे कंट्रोल में, इट्स कॉल्ड गाउटी आर्थराइटिस. गाउट होता है. गाउट इज यूजुअली मोर कॉमन इन मेन, and it is in the big toe. बड़ा toe से होता है, लेकिन it can affect any joint up to the ankle. तो वो जो ब्लड टेस्ट करते हैं जो डॉक्टर रूटीन में, उसको बोलते हैं यूरिक एसिड. When the uric acid is high, you can get gouty arthritis. तो आजकल तो पहले ही चेक करके बता देते हैं, लेकिन अगर the typical symptom is at night time you get up with a severe pain in the big toe and the foot, that's a sign of gouty arthritis. तो उसके लिए तो मीट खाना आपको कहेंगे बंद कर दो, प्रोटीन बंद कर दो, क्योंकि यूरिक एसिड को हमने कम करना है. So that's also preventable arthritis, and उसके लिए medicine is very, very effective. And then we talk about rheumatoid arthritis that affects females more and more. It can be at any age, but more around the age of between 45 and 55. उसमें जो है ना, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो हमने कहा एज वाला फर्स्ट जॉइंट इफेक्ट होता है, उसमें टिपिकली मिडल जॉइंट इफेक्ट होता है. और मिडल जॉइंट में स्पिंडलिंग जैसे हो जाता है, लाइक अ राउंड नॉट. दैट्स द साइन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस. और नी, इट अफेक्ट्स द रिस्ट जॉइंट, सो द रिस्ट, एल्बो, एनीथिंग, बट दैट्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस, व्हिच इज काइंड ऑफ सीरियस बिकॉज इट अफेक्ट्स द यंगर एज. बहुत डिसेबलिंग हो जाता है, इतना डिसेबलिंग हो जाता है कि आपके हाथ इतने टेढ़े हो जाते हैं अगर केयर ना करो. यू कैंट इवन लिफ्ट ए ग्लास. सो ऐसे ही आपको लगे कि आपकी हर वक्त जोड़ों में दर्द रहती है, we have to think of rheumatoid arthritis and go to a rheumatologist. Then there is a arthritis called lupus systemic erythematosus, long name. वो autoimmune arthritis है. That's even in the younger group. You can get it in 19 years, 20 years. So younger group में उसके जो sign होते हैं ना, उसमें muscle pain से start होते हैं. If you don't take care or don't get diagnosed, there's lot of treatment available. So if the muscle pains you avoid, if there is some kind of a rash or a blood count low हो जाता है, so everything put together, if you can think about lupus, but only the doctors can diagnose with special blood test. तो जैसे ही diagnose हो जाए, उसकी treatment हो जाएगी, तो you can control it completely. And then the other arthritis I said is a juvenile arthritis. वो बच्चों में होता है 14 years, 15 years. So जैसे ही उनके अब जोड़ों में दर्द होए, तो बच्चों को कभी आप कहेंगे ओ ये आज बहुत खेला है शायद इसलिए मसल में दर्द हो रही है. No, take it seriously. में abnormal है, it's called sedrate. So that also get done very frequently. Sedrate करते हैं, तो then you do further testing. Only other thing left is called fibromyalgia. कभी आपने fibromyalgia का नाम सुना ज्योति जी? Not really. Fibromyalgia is a problem which is underdiagnosed or overdiagnosed. Underdiagnosed means क्योंकि इसका cause नहीं किसी को पता.
सारी बॉडी में पेन होता है. Some people do all the tests, सारे आर्थराइटिस के टेस्ट करके बोलते हैं पता नहीं क्या है, तो उसको बोल देते हैं वेस्ट पेपर बास्केट डायग्नोसिस. नहीं समझ आ रहा, फाइब्रोमाइल्जिया उस पे लगा दो. तो वो इट्स अ सीरियस एंटिटी एंड इट कैन अफेक्ट यू साइकोलॉजिकली, क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं मे बी यू आर डिप्रेस्ड, दैट्स व्हाई यू हैव इट. नो, इट्स एन ऑटोइम्यून एंटिटी, ट्रीटमेंट इज अवेलेबल. तो ये हमारे 6 तरह के कॉमन आर्थराइटिस थे. उसके बाद में जो आर्थराइटिस बड़े अजीब अजीब नाम है, इंजरी से होते हैं, वो तो फिर रेयरली होते हैं, बट दीज थिंग्स वी हैव टू लुक इनटू इट. तो हमने आज कुछ बहुत अच्छा सीखा. क्या करो, स्ट्रेच करो, योगा करो और एंजॉय करो लाइफ को, एंड थिंग्स विल बी बेटर. राइट ज्योति जी? हर चीज हम जो भी अब अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, उन सब में यही हमको सीखने को मिलता है. एक्सरसाइज, ईट लेस, एंड व्हाट एल्स, ईट प्रॉपरली. लेस क्यों खाएं, हम प्रॉपरली खाएंगे हम. एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसी के साथ हम आज का सेशन आई कॉल इंफॉर्मेशन चैनल खत्म करते हैं और गाने की बात करते हैं. मौसम देखिए बाहर, देखिए आज तो धूप निकली है. टुमारो बी रेडी, इट्स 24 hours rain I heard. After the election it's gonna be raining. So अब क्या करेंगे, घर बैठेंगे, लेकिन आज तो हम बहुत एंजॉय करेंगे. ज्योति जी, you ready for the songs? I am ready for the whole day, busy day today. और जगजी आपने बहुत अच्छी शुरुआत कर दी. I'm sure it's going to help lots of people are watching. I hope it will help them. अगर आप अभी वॉच नहीं कर पाए, don't worry, हम YouTube का वीडियो भी आउट करेंगे so that you can watch any time you want. ठीक है ना, क्योंकि Facebook लाइव पे क्या होता है, वो नीचे हो जाता है पेज पर. YouTube आप you can go anytime. If you save the link and you can watch रात को, सुबह, और 10 साल बाद, 20 साल बाद कभी भी वॉच कर सकते हैं. वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन. सारी बीमारियां जो ज्यादातर होती हैं मेरे हिसाब से विंटर में ज्यादा आती हैं. बिल्कुल बिल्कुल. विंटर इज कमिंग. अभी तो लग रहा है समर ही चल रहा है, but winter is coming, so be ready for it, and protect yourself, and watch our take your flu shot. Everybody please do take your flu shot, and if you haven't taken a COVID yet, start thinking about it, and just be ready for the winters. And we will talk about someday about immunization in adult population, कि कौन से इंजेक्शन आपको किस एज पे लगाने चाहिए और क्या जरूरी है. We will definitely talk about that. अच्छा, फ्लू शॉट तो सब लें, पर बूस्टर भी, चौथा बूस्टर भी अगर नहीं किया है तो ले लो. आई एम गोइंग टू टेक टुडे. इसके बाद आई एम गोइंग टू टेक. कल भी मैंने मिस कर दिया, so I'm going to take. But the information is that you can take any booster. There's no contraindication. Yeah, that's what I'm saying. I took Moderna, but they are giving me Pfizer, so my son said Moderna and Pfizer can always be. Or mix is always good. 4 महीने से पहले ही लिया था, so I can take now, right? Yes, absolutely. Thank you. तो गाना हो जाए, जल्दी से गाना हो जाए. मेरे को आज पता नहीं क्यों इंडिया की याद आ रही है बहुत. तो इंडिया का गाना गाइए जी. अभी इंडिया में वैसे भी रात है. सुनिए, 2 लाइनें सुनिए. या बाय द वे, ये गुरु नानक जी की भी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो सबको उसकी बधाई हो. लख लख बधाई. गसी गुरुद्वारे गए सी, जगजी भी गए सी. बहुत अच्छा लग्या दर्शन किते और शब्द सुने. सबको ब्लेसिंग मिलती रहे, हमेशा मिलती रहे. और भगवान को, गॉड को, जो भी गॉड को मानते हैं उसको मानते रहिए और अपना कर्म करते रहिए. एवरीथिंग विल बी गुड इफ वी डू आवर कर्म एंड रिमेंबर गॉड and don't disrespect anybody. That's my motto. Yeah. तो मैं चलो आपको 2 लाइनें सुनाती हूँ. हाँ जी, 2 ही जी. ऐसे तो मेरे को जाने नहीं देंगे. हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद. अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चांद. हो हम तो हैं परदेश में, देश में
निकला होगा चांद। अरे हमारे यहाँ भी पूर्णमासी है जी, हमारा भी चांद निकला बड़ा सुंदर। आपने तो देखा लूनर इक्लिप्स हुआ था, कितना मजा आया। जग जी अब आप भी कुछ लाइनें सुना हाँ दीजिए। जी, मैं आपके लिए और हमारे सब देखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वालों के लिए। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन संभल जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थैंक लता, ये लता जी का गाया हुआ है, हाँ अनपढ़ जी, मूवी का है बहुत प्यारा गाना, और बहुत वेरी पॉपुलर सॉन्ग। उसका स्टेंजा कितना बढ़िया है ना। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। या मेरे को ना उसको पढ़ने में भी मजा आता है, पता नहीं किसका लिखा हुआ, यू नो द बहुत लिरिक्स। अच्छी लिरिक्स, बहुत अच्छे हैं और हाँ, बहुत अच्छी शेरो शायरी इसमें की हुई है। शायरी के वेरी yes। गुड। तो बस हमारा आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। सब लोगों को नमस्कार, और आपको हम अगले हफ्ते थर्सडे को फिर से मिलते हैं 11 बजे। हेल्थ इज वेल्थ में इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, एज वी ऑलवेज से। ठीक ऑलवेज। है, थैंक यू जग जी थैंक यू for ज्योति जी, giving your बहुत अच्छा। time to the community, and next week also we are going to have one topic. Jagji will tell you which topic. यस यस। Always we bring something good so that it can help you. Okay then, namaste. नमस्ते एवरीबॉडी।